Hey everyone, and welcome. This is our first lecture in the web development series as part of the Hackslash Study Jam. Before that, you had learned about Git and GitHub basics in our first Study Jam lecture. I am Anantam, and in this series of web development, we were going to master the fundamental building blocks of the web development. In this lecture, particularly, you will learn about the basics of web development, which are HTML and CSS. But before we jump into writing code, let's take a quick step back. Think about the early 90s. The internet was just plain text documents linking to other plain text documents. Fast forward to today. We have Netflix, Instagram, and massive interactive platforms. We have complex AI platform websites too. How did we get here? That entire journey is web development. So let's dive into what exactly that means. What is web development? So, when we talk about web development, it's the process of building and maintaining websites and web applications. It encompasses everything from creating a simple static page of plain text to developing complex web applications, social network services, progressive web applications, and electronic business solutions. When we talk about web development, we are basically talking about building and maintaining the digital spaces that people visit using their web browsers. It is not just about making things looks pretty. It involves managing data, ensuring security and optimizing performance. So this is all that web development, what is web development is. Now let's focus on front end versus back end development. The web development world is generally split into two main halves. Think of a restaurant. Now in a restaurant, the front end is the dining area. It's everything users see and interact with directly. When you click a button, see a responsive layout, or look at the cool visual element, that's front end. This is built using HTML, which is for structure, CSS for styling, and JavaScript for interactivity. It is also known as client-side development, since it is what client sees, it is what users see on their end. Now, when we talk about backend development, the backend development symbolize to the restaurant section. Like in the restaurant, the backend on the other hand is the kitchen. It's the server side handling all the behind the scenes functionality. This is where your data storage, server logic, and security happen. Like if you create an account on a website, the front end takes your details, but the backend stores it securely in a database using different technologies like Node.js, Python, or MySQL. It is known as server-side development, and it handles behind the scenes functionality. And I already explained you why it is known as server-side development, because this is where your data storage, server logic, and security happen. Now, when we talk about full stack development, it is nothing like an extraordinary term. It just combines both the front end and back end technology and development skills. Full stack developers can interact and work on all layers of applications because they know pretty well about both the front end and the back end portion. Like uh, in the superhero, like in a fictional character, like and if you are the superhero who manage both the dining area and the kitchen and of that restaurant, which we take example before, you are a full stack developer. When you are managing both the dining area for front end and the kitchen as the back end, you are that full stack developer.
This role combines both front-end and back-end skills, giving you a much better oversight of the entire project and how all the part works together. Now, let's talk about the backbone of everything we do, the client server architecture. Most people think like the internet is a cloud, but in reality, it's a conversion. The client is the requester. It's your browser like Chrome, Safari, Microsoft Edge, or even a smart fridge saying, "Hey, I want to see this page." The server is the provider. It's a powerful computer, usually sitting in a massive data center like AWS or Google Cloud, that stays awake 24/7 just waiting to serve you data which you had requested for. In this slide, you can see that client is the device that requests information from the server, whereas the server is a remote system that stores, processes, and delivers that requested data to the client. Like imagine you are in a library and you are the client which asks the librarian, which is the server, for a specific book, which is the website which you want to go for. The librarian goes into the stacks, finds it, and brings it to your desk. But here is the point. In web development, the librarian doesn't just give you a book, they give you a box of Lego bricks, HTML and CSS, and your browser has to build the castle itself. Now, let's go for the language of web, the HTTP and the HTTPS protocols. Like, you should ask that how the client and server talk. The client and servers both use a language called HTTP, Hypertext Transfer Protocol. You can see like it is the protocol used for transferring data over the web. It allows browsers to request and load web pages from the servers, but it is unencrypted, whereas HTTPS uses an encrypted version of HTTP. And for encryption, it uses SSL or TLS circuits. And why encryption is needed? If someone asks you that why encryption is needed, then you should know that encryption is needed to protect sensitive data from being intercepted by a third party person. Now, you can think of HTTP as the rules of engagement, but there is a massive problem with standard HTTP. It's like sending a postcard. Anyone handling that postcard from your Wi Fi router to the ISP can read exactly what's written on it, including your passwords. That's why we have HTTPS. The extra S here stands for secure, and for that it uses SSL or TLS certifications or encryption. Here, the HTTPS turns your data into a secret code before it leaves your laptop. Even if a hacker intercepts it, all they will see is like gibberish, like some random garbage numbers or text or characters. Only the server has the accurate, exact key to unlock that code. Like, like let's go to a site. This is NITP site, our college website. When I click on this, you can see that here it is like shown like it is an HTTPS site. Let's go to YouTube. It can clearly see that it is an HTTPS site. So these are HTTPS sites, and in current era, every developer should go for an HTTPS site. Otherwise, Google will derank your site and will scare away from your users from your website. Now, we often take browsers like Chrome or Firefox for granted. But a web browser is actually one of the most sophisticated pieces of software
in your machine. Its job isn't just to show a site, its job is to render it. When you type google.com, the browser does a DNS lookup, domain name server lookup, like looking up a phone number in a contact list. It finds the server, asks for the data, and the server sends back a mess of code. The browser then starts the critical rendering path. It reads the HTML to understand the structure. It reads the CSS to understand the style. It executes the JavaScript to add the brain. Like, have you ever seen a website load in real time where the text appears first but the layout looks broken sometimes for a second? That's you are witnessing the browser halfway through its rendering process. It's literally building the website in front of your eyes in milliseconds. Now let's go to our browser and let's go to our NIT Patna website. There is an inspect element option in your Chrome browser or Firefox or in Microsoft Edge 2. I should request all of you to go and do that. Here, go to the network tab and I'll reload the site. Here you can see like all these things are being getting rendered. This facebook.png, this twitter.svg logo, this nirf.png, this pic, this main entrance.webp, it is also a pic. So these all are being loaded currently in front of you. See, this is the HTML portion which has been loaded. And if you scroll down, you can see a CSS too. So these all are like CSS, HTML, and JS file which has been loaded and rendered in front of you in real time. So this is the magic of like web browser. All right, everyone. Let's talk about our weapons of choice. Before a carpenter builds a house, they need the right hammer. For web developers, our hammer is where we write our code. You essentially have two choices. First is text editor, second is IDEs. Now, a text editor is exactly what it sounds like. A simple, lightweight tool for writing code. There are multiple examples of that like Sublime Text, Atom. These are great because they open in a millisecond. They have syntax highlighting, meaning your code is colored, so it's easy to read. And they require minimal setup. They are clean and fast. But in today's world, they are a bit basic. Using a basic text editor is like riding a bicycle. It gets you there, but it takes a lot of effort. It doesn't have some advanced features which a developer need to tackle our boring everyday task. Now, there comes IDEs, which stands for Integrated Development Environments. This is like a superhero suit for developer. IDEs are robust tools packed with like built-in features to assist you in writing, testing, and debugging your code. Examples include Visual Studio Code, WebStorm, and the undisputed king right now is Studio Code. Now, anyone can ask that why do we love IDEs? Because they do half the work for you. They have advanced debugging tools. They give you intelligent code suggestions as you type. They help manage your entire project folder in a with a great visual manner. And they even have a terminal integrated right into the window. You don't have to keep switching between five different apps to build a website. Everything happens in one place.
That's why ID is important in today's world. Now, the second most important tool isn't something you download specifically for coding. It's the web browser. You already use Chrome, Firefox, Safari, or Edge, or many other. We use browsers to view and interact with website, obviously. But for a developer, from the developer perspective, the browser is essentially a laboratory. Nowadays, every modern browser comes with built-in developer tools. These tools are an absolute lifesaver. Like they are designed to help developers inspect, debug, and optimize website directly in the browser. It's like having the X-ray vision for the internet. If you ever wonder how did they build this website, developer tool will give you the exact answer for that. Like अब ध्यान से देखना एक बार इंडस्ट्री में क्या होता है कभी कभी हम लोग यहाँ पे देखो मैंने तुम्हारे लिए खोल के रखा है amazon.in के साइट if I right click on the product price here there is an option of inspect element. I'll click here and a panel opens up. There are multiple things and you might have like bit confused currently that what are different things. But don't worry about it. Over the time you will learn all these things. Now, these are commonly known as dev tools. When you will open this in Chrome, it is known as Chrome dev tools. Okay. So now let's see upon in we are in elements tab right now and we can see like here it is written 1199. Let's edit it. And when we edit it like an HTML and keep it like that, see, we change the price to rupees 1. I can inspect elements here and view or edit HTML and CSS in real time in that inspect element tab. Now, you should know that I had just changed the price of this smartwatch to rupees 1, but it is locally on my screen. Obviously, it doesn't change on the actual server, but it shows you how powerful this is for testing designs. Now, when you look at inspect element, there are multiple tabs. Like here is console tag. Here is console. So this tab will it will shout you right there in the console. If your JavaScript code has error, it will tell you here. It is where you will run scripts and view error logs. Then again we have network tab. In this network tab, you can see like have you ever visited a site that takes forever to load? The network tab monitors all requests like API calls and image loading and shows their response time, which you can see here. Here is time section. I'll reload this site and you can see this 0.03, 0.04. These are the response times. It tells you exactly which image or script is making the website slow. So you should know as a developer that you will be using DevTools constantly. So get comfortable with this. Now, now let's talk about the biggest nightmare for any CSE student or any tech student. Losing your code or messing it up so badly that you don't know how to fix it. Like if you make some changes which is making your site crash and you don't remember that where did you make that change, then it will a nightmare for everyone. This is where version controls come in. Like version control is a system that manages changes in your code over time. You can say it acts like a time machine. More importantly, but it allows multiple developers to collaborate on the exact same project without overwriting each other's work.
In the current scenario, the undisputed king of version control is Git. It is the most popular version control system in the world. Now let's break down its core concept so you understand the terminology. In Git, there are multiple things like first is repo, which is known as repository. You can think of this as the main folder for your project. It can be stored locally on your laptop or hosted even online on platforms like GitHub or GitLab. And second is commit. Whenever you reach a milestone in your code, like if, for example, you just finished building the navigation bar for your website, you make a commit. A commit is nothing but simply a snapshot of the changes you made to your previous code at that exact moment. And why it is done? That if your laptop crashes tomorrow, your code will be safely saved at that snapshot. Then we have branching. Let's say your website is live and working perfectly, but you want to add a crazy new feature like dark mode feature. So you don't want to experiment on the live code and break it. So you will create a branch. This will create a different separate version of code for you to work on the features or fixes safely. Finally, if your dark mode look awesome and works perfectly, then you can merge it. Merging is nothing but the process of combining changes from different branches back into the main code base. Git will handle all of these very smoothly. Now, before getting into like coding part, you should know that what the end goal is. Where does learning this web development will take your career? In web development, we generally have three main paths: front end, back end, and full stack. Let's start with front end developer. If you are an artistic person, if you care about how things look and how smooth an animation feels, this domain is for you. A front end dev focuses on building the user facing part of website and applications, literally the look and feel that user interact with directly. You will be working with languages like HTML, CSS, and JavaScript, and eventually frameworks like React, Angular, or Vue.js. Your responsibility is creating website layouts, interactive elements, and ensuring responsive design so that site looks good on both a massive monitor and a tiny mobile phone. You also need to optimize the website performance for fast load times. On the other side, we have the backend developer. These devs don't care about the color of a button. They care about what happens when you click that button. They work on the server side, focusing on the databases, server logic, and APIs. They ensure that front end actually get the data it needs. Here in this development, you will work with language like Node.js, Python, or Java, and manages databases like MySQL or MongoDB. Your job is designing these databases, writing server-side logic, handling user authentication like logging in securely, and integrating third-party APIs. You are the brain behind that front-end phase. And finally, the full stack developer. This is the ultimate goal for many. A full stack developer is combination of both front-end and back-end development. You handle absolutely everything from the user interface all the way deep down to the databases. You need to be proficient in client side languages like HTML, CSS, JS, and server side languages like Node.js and Python, as well as frameworks for both sides.
You manage the end to end flow of data and build the entire application yourself. Yes, for all these, it will require a lot of learning, but it gives you an incredible project oversight and makes you incredibly valuable to tech teams out there in world. So, from in full stack developer, you are going to be a one person now. Gets our hand to a bit of code. Welcome to section 5, HTML basics. First question, what actually is HTML? So HTML stands for Hypertext Markup Language. Let me repeat that because this is most common mistakes beginner make, I am repeating it again. HTML is not a programming language. It is a standard markup language. A person can ask you that why is it not a programming language? Then you should answer because it has no logic. You cannot write an if-else statement in HTML. Can't write a for loop or do math in that HTML. So, what does it do? It describes the structure and the semantic meaning of content on the web. It uses tags to structure the content. You can think of it like this, like when you read a newspaper. How do you know what the main headline is? Because the text is massive and bold. How do you know that what a paragraph is? Because it is smaller text in a block. There are multiple ads in newspaper. It was put aside on a left or right side. How will you know that? Because it was completely aside from the section, from the main section. HTML does the exact same thing for web browsers. We use tags to say, hey browser, this piece of text is a main heading, or hey browser, this is an image. HTML acts as the backbone of any web page. If a website was a human body, HTML is the skeleton. It holds everything up. CSS will be the skin and clothes that make it look good, and JavaScript will be the muscles that let it move. But without a strong HTML skeleton, everything just falls apart. Every single HTML document in the world, whether it's simple college project or a landing page of Google, shares the exact same core structure. Let's break down this code block line by line. Now let's go to VS Code. In last section, we also discussed that why we use ID. You can see it live here that why we use ID. I just type an exclamation mark and use enter. See, that's the magic. This is why we should use ID. It will make look and it will just make your work a bit simple. It will uh, do all the boring stuff. Now, let's come to what is this exclamation doc type HTML. This is always the first line. It declares the document type to the browser. By simply writing this, we are telling the browser, hey, read this file using modern HTML5 rules. If you forget this, the browser might panic and load your site in a weird, broken, outdated mode. Now, this is HTML lang in. What is this? This is the root element. Notice how there is an opening HTML tag and a closing HTML tag too. Here it is a closing HTML tag, and here it is an opening HTML tag. Absolutely everything on your web page lives inside this HTML tag container. Then comes the head. This head section contains metadata. Think of the head as the brain of your website. It contains crucial information about the page, but nothing inside the head is actually visible on the front end or the screen to the user. Inside it, we will put things like
This thing meta cassette UTF-8, meta name is equals to viewport contain width. So what are these things? This metadata tells the browser to use a specific character set, meaning your site can display any language or emoji correctly without turning it into a weird symbols. Now what the next tag means? It states that actually this is a magic line. It defines the viewport metadata. Without this line, your website will look like a teeny zoomed out desktop site on a mobile phone. This line literally makes responsive mobile design possible. What about title? This page title, this sets your page title. This is the text you see written on the actual browser tab at the very top of the screen. And it is also a closing tag. There are multiple tags in HTML which we will learn later. Now comes the body tag. The body tag contains all the visible content, every heading, every paragraph, every image, every button that the user will actually see goes exactly inside these tags. Like here, we have an H1 tag. Like, let's see. In your slide, there was an H1 tag. Let's write my first page. Also include like one paragraph tag here, and we can write my first page. Let's keep it simple. We will write the same content here, and I have installed a live server extension. You can install it too, and it will open the site like, see, it opened the site like this. So what is it? You can clearly see we use H1 tag, and it was completely shown that it is looking like a heading. And then we use a paragraph tag. It is completely saying that it is a bit small than this. Now in VS Code itself, there are multiple heading tags too, starting from H1 and ending to H6. So of different size. Now HTML has evolved over the years, and the current standard is HTML5. In the old days, developers used to divide their website using a generic tag called a div for everything. पहले हमेशा हम लोग div में ही रखते थे. मेन्यू के लिए div यूज करेंगे, footer के लिए div यूज करेंगे, किसी आर्टिकल को लिखना है तो div यूज करेंगे. It was confusing for search engines like Google to read. So now HTML5 introduced a specific semantic tags to make code cleaner and give structural meaning. So all you can see here on this slide is semantic tag. We use this specifically for the page or section header, usually where your logo goes. The nav tag stands for navigation menu. This tells the browser, hey, the links inside here are the main menu of the site. Now, what is main? So it wraps the primary main content of your web page. What is article tag? Used for independent content like a blog post or a news story. And you will use section tag for thematic grouping of content, and aside for sidebar content. You can see in any website that if you will open this website, see, let's open, you can see here in a much better way, youtube.com. You can see here, what is this? This is a sidebar. This is actually a sidebar. So for this, you will use a side tag. What is footer? So you can see, like in our any website, you will see like the copyright symbol is there, and the website links are there, social media links are there. There are multiple things on the footer, like it is used for page or section footer right at the bottom of the website. HTML5 also gave us
built-in audio and video tags, so we can natively embed media without needing third-party plugins. Initially, third-party plugins were there for audio and video things, but now it gave us particularly those tags like audio and video tags, so you can embed media right there. Use specific tags instead of just generic containers is a massive part of modern web development, which we will dive deeper into when we will discuss semantic HTML. We will discuss it shortly. All right, everyone. Let's start putting actual content on our web page. The most fundamental building blocks of any site are text elements. Let's talk about heading first. In HTML, we have six levels of headings, starting from H1 down to H6, where H1 is your main title. You can say like it is the most important text on your page, like the important heading in a newspaper, the big bold thing. H2 is your subtitle, H3 is section title, all the way down to H6, which is the smallest and least important heading. Now listen to me very carefully, because a lot of beginners make this mistake. Don't you use headings just to make your text bigger. If you want big text, use CSS. You can use it. Headings are for hierarchy. Think of it like writing a textbook. Your book's title is the H1. The chapters are H2. The topics inside the chapter are H3. So just don't make huge headings everywhere so that your text look bigger and bolder. Don't make it that way. Also, Google reads your website exactly like this to understand what your page is about. If you have three H1 tags on a single page, Google will definitely get confused and your SEO, it means search engine optimization, drops. Next, we have paragraphs written simply as P for regular paragraphs text. But what if you want to emphasize a specific word inside that paragraph? We don't just use visual styling, we use semantic formatting. For example, instead of just making text bold, we can use a strong tag to denote bold important text instead of just italics. We can use M tag for emphasized text. We also have mark tag to create highlighted text and block quote. When you are writing quoted text from another source, you can use block quote tag. Like, let me type this out. Like, I had already typed something. This is a few tags like H1, H2, H3, H4, H5, H6. But comment it out. You have P tag here, and let's write a strong tag here. And I'll write the same content, my first page. And since I have live server installed as an extension in my VS Code, I can use it and see. Ignore these things. I should comment it too. See, here you can see the strong tag which I had used. It make the text bolder. अगर मैं VS कोड में स्ट्रॉन्ग में हैकस्लैश लिखूंगा तो हैकस्लैश को वो ऑटोमेटिकली बोल्ड कर देगा. बट मोर इम्पोर्टेंटली, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड यूजर स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है, ठीक है, तो जब स्क्रीन रीडर इस वर्ड पर आएगा, इट विल फिजिकली चेंज इट्स टोन ऑफ वॉइस टू एम्फेसाइज इट. दिस इज द पावर ऑफ HTML. आपको ये चीजें सीखनी है. ओके, मूविंग ऑन. हाउ डू वी ग्रुप आइटम्स टुगेदर? We will group it with using list and tables. Imagine you are making a grocery list or a navigation menu. You have two main types of lists. First is unordered list, second is ordered list. Now, the
unordered list written as UL will give you bullet list or bullet points. Inside the UL tag, every single item is list LI. It is known as list item. Like the thing which is inside the LI tag is known as list item. Okay. So let's see in the VS Code itself. I had used the H1 tag. I think I should explain it to you. And then there is H2 tag, and it is written unordered list. And it shows that it is the LI tag, the item, the list items which are been written here will be shown as a bulleted points. When we talk about the ordered list, here the list items will give a numbered thing. Like the second type, which is the ordered list, which gives you numbered list. Let's see it on a web page. Look at this. This is the H1 tag which we had used. Then this is H2 tag. Then this unordered list, it's showing bullet things, bullet point. Then ordered list are being shown as numbered things, numbered list items. Now, then we have tables. Guys, tables are strictly for displaying tabular data, like a spreadsheet or a timetable. We should never use table to design our website layout. This is 90s technique. Also, a proper HTML table has a specific anatomy. We will start with the table tag. Then we will define the head of the table using T head. Inside the head, we will create a table row, which is TR. Then we will put our table headers inside that using TH. Here, the table tag is there to initialize the table. Then this is showing TR and this is TH. In the TR, with that we will create the rows, table rows. And the TH shows what will go inside that header. After the head comes the table body or the T body. Here again we will create rows. Okay, but this time the actual data goes inside TD, which is table data tags, like TD. You can see here it is the TH. What is difference between that? This is TH. Here table headers are there, and this is TD. Table data are there. Okay, and in your slide there is one more list known as definition list. This list is great for glossaries, not grocery, glossaries. It uses DL and DT. DT for the term and the DD for the definition. Again, structure is the everything. And here you can see it. The product price list. Here is product, which is the product price and the stock are inside the PS tag. And these are the data which are inside TD tag of our table. You can see here the product price and the stock are inside the TD tag, TH tag, sorry, and the laptop, mouse, all these things are inside TD tag, which are being currently displayed here. Now, when we talk about what makes the web a web, it's the link. Without link, the internet is just a bunch of isolated Word documents. We create links using the anchor tag written as A tag. To make a link work, you need the href attribute. For an external link, you put the full URL here. If we tag it as a google.com, like in this, it's right here. And see why we should use VS Code. In VS Code, it will give you suggestions like this, like what I have to write. Then it will give suggestions like this. And this is where we should use VS Code or some IDEs. This is the difference, main difference between text editor and IDEs. Okay. So this is when we are linking external link.
It means when I am making a website, and if one should click that link, and it should redirect to a other page. For example, here we should use like nitp.ac.in link. So let's go with that. And here uh, we can write like this is link of NITP website. Uh, let's see. See, this is what it is. When we should click it, it will redirect to an IT partner website. This is the power of external links. Okay. Now you are thinking like why it is looking so ugly, why it is on the same horizontal line, horizontal thing. For that, you should use a BR tag here. BR tag is like self-closing tag, and it actually make a line break in our code. See, it will shift to the next line. This is what BR tag did. Now, we also have some internal link thing. Internal link is nothing but different web pages inside your own project. Like, let's go to official site of an IT Patna. When I will visit it here, you can see institute. First, I'll choose the language, but you can see here is institute. When I will click here, let's see, go in about section. This will come. So this is what you can see. The first is institute. It will redirect your website to a different page, not a different website, to a different page inside your own website. This is what internal links signify. Now, we also can create an email link using anchor tag. It will directly open Gmail or Outlook whenever a user click on it using your their default mail app. मतलब जब भी आप लोग क्लिक करेंगे उस पे तो आपका जो भी डिफॉल्ट मेल ऐप होगा जीमेल या आउटलुक वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और उससे आप डायरेक्टली मेल जो है वो कंपोज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज images. A website without images is boring. We use the self-closing image tag. The most important attribute here are SRC. What is SRC? So SRC is like source path of the image, and alt. This is an attribute. It is like alternative text. Like God forbids, but if your image didn't load in your website, then this alt thing will show this text, the description text, instead of that image in that place. That's why uh, there is a universal rule that alt attribute को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए unless the image is purely for decorative purposes. It provides a text description if the image fails to load, and it is crucial for blind users who rely on screen readers. We can also set basic sizes using width and height attribute directly in HTML, and it is shown here. But what if a user is on tiny mobile phone versus a massive 4K monitor? HTML5 gave us the amazing picture tag. Inside picture, you can define multiple source tags with media queries. For example, you can tell the browser if the screen is minimum 650 pixel wide, load this image like large.jpg. If it is a smaller, then load a small.jpg. Now, this technique saves so much internet data for mobile users. Okay, so this is where your website becomes interactive through forms. If you want a user to log in, sign up, or send you a message, you need forms. Everything starts
inside the form tag. I had already typed it here. See, and here I had already linked a style sheet, a CSS, uh, through which your this web page or form will look a little bit more better on a screen. Now, in form, everything is start inside form tag. Now, in form tag, there are different attributes. See, these things are known as attribute, like action and method are known as attribute. Here, type, name, placeholder are attributes, and this is form tag. This thing is known as tag, and these are attributes. Now, there are two critical attributes inside form tag, known as action, where the data should be sent like submit, and method, how to send it, like post for secure data. Inside the form, we use input tags, and the magic of input tag is its type attribute. If you want a normal text box, use input type text, which is already written. मतलब तुम्हें जो चाहिए वो तुम अपने टाइप में लिखो, ठीक है। अगर हमें ईमेल प्रिंट कराना, ईमेल चाहिए, ईमेल इनपुट लेना है, तो हम लोग टाइप में ईमेल डिफाइन करेंगे। ओके, modern browsers will automatically check if the user type an @ symbol or not before letting them submit. Now, what does this required means? It means that you can't submit the form without submitting email, without writing email. Now, if you use input type password, now what does password do? The browser will hide the characters as asterisks to keep it secure, so that the person or the surrounding people can't see your password. Okay, now we have input type checkbox. What does this do? It is for multiple choice. जिस तरह से हमारे गूगल फॉर्म में चेकबॉक्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, उसी टाइप से ये भी एक चेकबॉक्स की तरह है. It's for multiple choices and input type radio for single choices. Like it is used for अगर आपको gender select करना है, male or female. So we can use radio buttons, but you have to select multiple options. Then you will use checkbox. Now through select thing, अब select करने से हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है. Using select tag, it contains various option tags inside it. If you want a big box for a long message, we should not use a normal input. Instead, we will use a text area. This text area tag, which I had used here, this text area tag is where you can define the number of rows and columns. Finally, to send all this data, we need a button. Now, that's why we use the button tag. Now, button, finally, to send all this data, we are using button. Now, when you submit, this submit actually got been clicked. After that, the data will be sent to the database or server. But it is the part of backend thing. It is not in HTML portion. HTML is just defining the structure, how the form will look like. Let's see it live. See, this is your form. This is the username, something like that. This is the mail. We can use password. See, here you can't see what I am typing. That's what uh, it actually do. This is checkbox. This is male or female. We have drop down India or Israel, and this is the text area. Now, see, if I am clicking on submit button, it is telling me to enter an email address. It is showing a pop-up. Why it is showing a pop-up? Because I had not used a symbol here, and .com.in symbol हमने use नहीं किया है. Let's put our original email address here.
नाउ इट विल बी सबमिटेड। सी, अब इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो ये सब डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर होगा, हमने ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लिखा है। तो दिस इज व्हाट फॉर्म इज, आपका लॉगिन पेज इस तरह से तैयार होता है। नाउ आई हैव बीन हिंटिंग एट दिस फॉर द पास्ट आवर, let's officially talk about section 7, semantic HTML. First question anyone can ask, like, why semantics matter? Why do semantics matters this much? Semantic HTML gives actual meaning and structure to web content. It's not just about presentation. It makes your code incredibly readable and maintainable for other developers. More importantly, it helps search engines better understand and index your content. If you want your college startup website to show up on the first page of Google, you must use semantic tags. It improvises the SEO. Now, from example, like instead of wrapping your website's header in generic div, or we should use the header tag. For your navigation menu, use nav tag. The core of your page goes into main. And if you have self-contained content like a standalone news article, then we should wrap it in article tag. So these are few tags which I had already discussed earlier. These are few important tags like figure and fake caption. These are specific tags used for image with captions, and there is time tag which is for properly defining date and times. Now, why are we doing this? Then you should answer, we are doing all this for accessibility benefits. When you use these semantic landmarks, screen readers can accurately understand the page structure. Keyboard navigation becomes logical. Assistive technologies can immediately identify navigation menus, main content areas, and page landmarks. It creates a logical document outline that makes sense even if the CSS completely fails to load. So we don't just build for people with perfect vision and a mouse. You can't expect that your website is for those people only. We are building for everyone, for the world. And for that, we should know that why semantic tag matters this much. To wrap up our HTML deep dive, let's look at section 8, which is HTML best practices. This is what separates a beginner from a pro. Let's review the document structure checklist. I had already shown you what is this and what are these things. I had explained it to you. So we should always declare the exclamation doc type HTML tag and character encoding meta charset UTF-8. We should always include that this HTML lang end thing for accessibility and the viewport meta tag for responsive mobile design. We should always use descriptive title tags and most importantly, organize your code with proper indentation. Like अगर तुम्हारा कोड फॉर्मेट नहीं है तो डिबग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा दूसरे के लिए, ठीक है? और नेमिंग कन्वेंशंस की जब बात करें तो we should always use lowercase letters for file names, no spaces, space break URLs, spaces जो है वो URL को ब्रेक कर देता है, use hyphens instead, like about us.html is perfect, you can see here, but page1.html is terrible. मतलब तुम उसको क्या बता रहे हो? अगर कोई दूसरा डेवलपर तुम्हारा वेबसाइट चला रहा है तो तुम उसे कैसे समझाओगे कि ये जो पेज वन जो है अबाउट अस सेक्शन का पेज है, पेज टू, ऐसे तुम अगर 50 पेजेस का तुम्हारे पास 50 पेजेस है तो दूसरा डेवलपर तुम्हारा प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट समझा नहीं रहा है कि ये वेबसाइट किस चीज के लिए है,
ये वेब पेज जो है वो किस चीज को डिफाइन करता है, तो वो तो ढूंढते रह जाएगा हमेशा. That's why we should always name it properly. When you start adding IDs and classes to your HTML, which we will use heavily in CSS, don't worry about it. IDs और classes जो है वो हम लोग div में use करते हैं. So use meaningful descriptive names. Avoid overly generic names like div1 or section 2. Instead, follow consistent naming patterns like main dash content. This is kebab case and this is camel case. ये आप जान लीजिए कि ये दोनों किस क्या होता है. It's not very important, but yes, it should be used, and it you will use it over time. Don't worry about it. Finally, आपको मैं बता दूं कि before publishing your website, before you ever publish your website, you must go through validation and testing. Cross browser testing, you should do that. That does it work on Chrome? What about Firefox? Test it in multiple browsers and definitely check its mobile responsiveness. If you will get a task from Hackslash about something, then definitely make sure that the deployed site will open in mobile in the same manner it is opening in a website. Like it, I'm not telling about in the same manner. Like it should be with a great visual effects. Okay. Can you now when we test accessibility, so you should ask yourself, can you navigate your entire site using just the tab key on your keyboard? Verify your ARIA labels, ARIA labels, and use screen reader testing. And sometimes use Google Page Insights. Go to Google Page Insights, type your URL, and check page load times. Check your performance score, SEO score. Like minimize your HTML size and always optimize your images size. Don't upload a 10 MB raw image file to a website. Okay. So all these things you will learn over time, and with that, you now know about the absolute core fundamentals and the best practices of HTML. Up next, we'll bring the skeleton to life with CSS. All right, guys, take a deep breath. We have successfully built and know about the skeleton of the website using HTML. But let's be honest, a pure HTML website look like a boring Word document from 90s. Now it's time to bring in the magic. It's welcome to CSS fundamentals. So CSS stands for cascading style sheets. Its entire purpose is to describe the presentation of HTML documents. HTML is the structure, the bones. CSS is the presentation, the skin, the clothes, the makeup. The most beautiful thing about CSS is that it is completely separates your content from your presentation. ऐसा समझो कि अगर तुम्हें किसी भी HTML पेज को और सुंदर दिखाना है और खूबसूरत दिखाना है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा यूजर तुम्हारे पास आने की कोशिश करे, ठीक है, हर कोई तुम्हारे वेबसाइट पे आने की कोशिश करे, तो तुम्हें उसका CSS फाइल काफी अच्छा बनाना पड़ेगा. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और CSS भी उतना उससे ज्यादा ही एक तरह से कहो कि इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर तुम्हारे यूजर आ भी गया तुम्हारे वेबसाइट पे, तो कभी तुम्हारा वर्ड ऑफ माउथ से कभी वो फैलेगा ही नहीं बात. So what exactly does it control? Literally everything visual. It controls the layout, the colors, the spacing, the typography and the responsiveness. ये सब कुछ CSS के अंदर आता है. तुम्हारा कौन सा चीज किस कलर का दिखेगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, कितना स्पेस देना है, कितना किस फॉन्ट में लिखना है, ठीक है, और फोन पे कैसा दिखेगा वो चीज, डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट साइज में दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये सब कुछ CSS के अंदर आता है. With CSS, you can literally ensure that consistent styling across multiple pages of website. अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट के अप्रॉक्स 50 पेजेस पे बटन का कलर सपोज ब्लू से रेड करना हुआ, तो
you should not go to 50 different HTML5. तुम सिर्फ एक लाइन CSS में चेंज करोगे और वो सारा का सारा वेबसाइट में, पूरे के पूरे साइट में कैस्केड्स कर जाएगा। इसलिए इसका नाम कैस्केडिंग स्टाइल साइट्स पड़ा। That's why CSS is known as cascading style sheets. Okay? Because you will change one line in CSS and it cascades across the whole site. Now, so how do we actually connect this CSS to our previous made HTML skeleton? So there are three different ways. तीन अलग अलग टाइप से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक वी शुड डू दिस लाइव। हम लोग हम लोगों ने एक HTML बनाया था। इसको हम लोग एक, चलो थोड़ा कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक इनलाइन एलिमेंट का यूज करते हैं पी टैग के अंदर। यहाँ पे स्टाइल यूज करते हैं। और देखो स्टाइल कितना काम का चीज है VS कोड, जो एक्चुअली आपको बताता है कि हाँ अच्छा, स्टाइल स्टाइल अगर आपने यूज करा है, इंटर मार्क करिए, स्टाइल के अंदर ये चीजें आ सकती है। सो वी कैन फाइंड हियर लाइक कलर है, यहाँ पे कलर क्लिक कीजिए, वापस से आपका सेमी कोलोन और कोट कोलोन आ गया। यहाँ पे आपको जो यूज रखना है यूज कीजिए, लेट्स सपोज ब्लू, ब्लू आ गया। ठीक है, आपको कुछ फॉन्ट साइज रखना है इसका, यू कैन कीप द फॉन्ट साइज। देखो यहाँ पे फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ गया आपके पास। इसलिए लोग आईडी यूज करते हैं। और हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, सी देयर आर मल्टीपल साइजेस। ठीक है, जो आगे आप पढ़ोगे भी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल साइजेस का ऑप्शन है। हम लोग 16 पिक्सल रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट्स राइट हियर # एंड गो लाइव। सी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप दिखेगा, ये सारा ब्लू से हो चुका है। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, that you can see this properly। ये सब कुछ ब्लू से हो गया, देखिए। सो complete text is blue now, but avoid these type of styling content। अब आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, इतना अच्छा तो काम किया। बिकॉज इट विल मेक योर HTML incredibly messy। ठीक है, वो काफी अजीब बना देगा, एंड इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग कंटेंट फ्रॉम स्टाइलिंग। अगर हम लोग HTML CSS अलग अलग कर रहे हैं, कंटेंट को अलग रख रहे हैं, स्टाइल को अलग रखें, तो को सारा का सारा उसका मतलब ही बेकार हो जाएगा अगर आप इस टाइप से लिखेंगे तो। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या है, ये फर्स्ट मेथड हो गया जिसको हम लोग इनलाइन मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग इनलाइन मेथड बोलते हैं कि हम लोग जिस लाइन में HTML लिख रहे हैं उसी के अंदर, उसी टैग के अंदर हम लोग इस चीज को यूज कर दिए। सेकंड इज लाइक इंटरनल एम्बेडेड CSS। इंटरनल CSS या तो हम लोग एम्बेडेड CSS बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमने जो सेम चीज लिखी है, ठीक है, अब ये एम्बेडेड CSS आपका लाइव एग्जांपल मैं आपको कहाँ दिखा सकता हूँ। मैंने इस CSS को यूज कर रखा है। सी, एक यहाँ पे हमने CSS का फाइल बना रखा है। हमने आपको अभी कुछ समय पहले फॉर्म बनाया था, हमने HTML में फॉर्म सब सीख रहे थे। मैंने उस समय आपको बताया था कि ये इतना अच्छा इसलिए दिख रहा है फॉर्म, क्योंकि इसमें CSS ऐड है। हम लोग इसी CSS को यहाँ पे अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हम हेड के अंदर एक स्टाइल टैग डालेंगे हम लोग, और स्टाइल टैग के अंदर वी आर यूजिंग दिस होल CSS जो हमने form.css में बनाया था। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है, इसको अभी आप भूल जाइए। ठीक है, अभी बस देखिए कि हमने हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर CSS फाइल को यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, इट इज नोन एज इंटरनल या एम्बेडेड CSS। ठीक है, और इसमें इसमें भी एक इश्यू है कि दिस थिंग इज ओके फॉर सिंगल पेज टेस्ट। बट क्या हो अगर आपका वेबसाइट 10 पेज का है, you would have to copy the same block 10 times in everything। ठीक है, आपको 10 पेज का वेबसाइट है तो आपको हर बार इसको कॉपी कर पेस्ट करना पड़ेगा इस ब्लॉक को।
दैट्स वाई हमारा आता है एक्सटर्नल सीएसएस, जो कि सारे प्रोफेशनल अभी करते हैं, और वही आपको मैं रिकमेंड भी करूंगा करने के लिए. दिस इज हाउ प्रोफेशनल्स एंड डेवलपर्स डू दैट. वी विल क्रिएट अ कंप्लीटली सेपरेट फाइल. ठीक है, और वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जिसको हमने फॉर्म डॉट सी एस एस का नाम दिया है. और हम लोग इसको यहाँ पर लिंक करते हैं. कैसे लिंक करते हैं? हम लोग लिंक करते हैं यहाँ पे लिंक टैग की मदद से. हेड के अंदर ही हम लोग का लिंक टैग है, और लिंक टैग की मदद से हम लोग इसको लिंक करते हैं. किसको? फॉर्म डॉट सी एस एस को फॉर्म डॉट एच टी एम एल में. ये एच रेफ बताता है कि हम लोग को वो रेफरेंस का है, मतलब वो जो सी एस एस फाइल है हमारा फॉर्म डॉट सी एस एस, वो कहाँ पर है. और ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टाइल शीट लिखा हुआ है. स्टाइल शीट बताता है कि इट्स अ स्टाइलिंग फाइल, सीएसएस फाइल है, इसको स्टाइलिंग के लिए यूज करना है. ठीक है. इन दिस वे तुम्हारा हेड के अंदर जो चीजें हैं वो रेंडर हो जाएगा फॉर्म को रेंडर होने से पहले. दैट्स व्हाई वी यूज इट इन हेड. और यहाँ पे क्लमजीनेस भी नहीं आएगा, इसमें कोई मेसी भी कोड नहीं लगेगा. फॉर्म डॉट सी एस एस अलग है. इफ यू वांट टू चेंज समथिंग in CSS, like color or something of a particular section, you can change it here. You don't have to see that messy code here. Okay, क्योंकि HTML में ऑलरेडी देखिए मल्टीपल चीजें होती है. अगर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो ये और मेसी हो जाए. ठीक है. तो ऐसे समझो इसको कि अगर तुम्हारे कॉलेज फेस्ट में लाइक 100 वॉलेंटियर्स हैं और सबको ब्लू टी शर्ट पहननी है, तो इनलाइन सीएसएस का मतलब है कि तुम एक एक वॉलेंटियर के घर जाके उसको टी शर्ट पहना रहे हो. इंटरनल सीएसएस का मतलब है तुमने एक क्लास में सबको जमा किया और वहां टी शर्ट बांटे. और एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब है तुमने कैंपस में एक नोटिस बोर्ड पे लिख दिया कि सब ब्लू टी शर्ट पहन लो, और जिसके पास वो नोटिस जाएगा वो पहन लेगा. दैट्स व्हाई इट्स क्लीन, इट्स स्केलेबल, एंड योर ब्राउजर कैचेस दैट फाइल टू मेक योर साइट लोड सुपर फास्ट. नाउ बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, मतलब मुझे कुछ बताना है आप लोगों को क्लासेस और आईडीज़ के बारे में. तो क्लास और आईडी क्या होता है? हम लोग, आपको याद होगा एट्रीब्यूट की बात किया था मैंने, ऑल्ट एट्रीब्यूट को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए. तो उसी तरह से क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स भी चीज़ें होती हैं. क्लास is like your batch, your branch, say computer science. There are many students in the computer science class. In HTML, you can assign a class name to multiple elements. मान लीजिए आपके पास आपके साइट पे 5 बटन हैं, ठीक है, और आप पांचों को बिल्कुल सेम दिखाना चाहते हो. लेट सपोज मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ठीक है, जिसको मैंने एक क्लास दे रखा है पहले से, और मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सेम दिखे. मतलब मेरे पास मल्टीपल ऐसे चीज़ें हैं, मेरे पास ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ्स है, और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टाइलिंग जब करूँ इसका, तो वो बिल्कुल मतलब मैं एक जगह स्टाइलिंग करूँ और सारा का सारा एक साथ स्टाइल हो जाए. तो मैंने फ़ॉन्ट साइज इसका फिक्स कर दिया 16 पिक्सल का, ठीक है. उसके बाद मैं कलर फिक्स कर देता हूँ इसका, और कलर आपके लिए इस बार मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, लाइक ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है. अब देखता हूँ इसमें कि मैं इसमें क्या चेंज कर पाया हूँ. एंड इससे आपको समझ में आएगा कि क्लास जो है उसको हम लोग ग्रुप स्टाइलिंग क्यों कहते हैं. सी, सब का सब जो है वो ब्राउन कलर का आ गया. तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ही क्लास के मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और आप सबको एक जैसा दिखाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ सबका क्लास सेम कर दीजिए और सिर्फ उसको आप स्टाइल कीजिए स्टाइल शीट में अपना CSS में. सिर्फ एक जगह आप उसको चेंज कर दीजिए, सारा का सारा एक साथ चेंज हो जाएगा. दिस इज़ वाई क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब आप पूछिएगा फिर आईडी क्या होती है. तो आईडी इज़ जस्ट लाइक योर रोल नंबर. इट इज़ एब्सोल्युटली यूनिक टू यू. Nobody else in the entire college has your roll number. ठीक है. अब HTML में एक ID must be completely unique on that specific page. You should use an ID when you want to target exactly one specific element. Like मैंने यहाँ पर एक मैं ID दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लास की जगह
ID CSE लिख देता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पे कि क्या चेंज होगा। बाकी सब तो ब्लैक कलर का है जो डिफ़ॉल्ट होता है कलर, लेकिन ये ब्राउन हो गया। इट मीन्स इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट सम पार्टिकुलर एलिमेंट देन वी शुड यूज़ ID, ओके। और एक और बात कि यू कांट हैव टू एलिमेंट्स विद द सेम ID। आप दो एलिमेंट को नहीं रख सकते एक ID के साथ, तो ये बात ध्यान रखिए। बट आप उसको सेम क्लास में रख सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड क्लासेस एंड IDs, क्लास सेलेक्टर्स काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। अब क्लास सेलेक्टर क्या होता है, मैंने अभी आपको फॉर्म बना के दिखाया था कुछ टाइम पहले जब हम लोग HTML में पढ़ रहे थे फॉर्म के बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि जो फॉर्म है हमारा ये अच्छा दिख रहा है, इसका रीज़न है कि इसमें CSS यूज़ किया गया है, जो आप सीखेंगे। तो इससे हम समझते हैं कि फॉर्म डॉट CSS में क्या क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने H1 टैग यूज़ करा है, ये H1 एलिमेंट है, इसमें हमने टेक्स्ट लिखा है फॉर्म का, ठीक है। अब H1 एलिमेंट में इफ़ वी यू कैन से एवरी सिंगल पैराग्राफ, अगर हम लोग यहाँ पे कोई पैराग्राफ होता या फिर कुछ भी होता, अगर हम लोग किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको स्टाइलिंग के लिए रख रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ स्टाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज एलिमेंट सेलेक्टर। तो आप बोलिएगा फिर और टाइप कितने होते हैं सेलेक्टर्स के, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे हैश का साइन, हैश CSE। अगर आपको ID सेलेक्टर करना है, ठीक है, तो टू टारगेट एन ID यू मस्ट यूज़ अ हैश और पाउंड साइन बिफोर द नेम, ठीक है। सो द हेडर लाइक सो हैश CSE, उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे स्टाइलिंग करना है आप स्टाइलिंग करेंगे। दिस टारगेट्स द वन स्पेसिफिक एलिमेंट विथ दैट ID, जो भी आप यहाँ पे CSE जैसे लिखा हुआ है, तो आप ये पार्टिकुलर ID को टारगेट करेगा, ठीक है। अब आपको क्लास सेलेक्ट करना है, तो हैश की जगह सिर्फ आप यहाँ पे डॉट कर दीजिए। अब वो डॉट CSE क्या करेगा कि जितना भी यहाँ पे CSE क्लास का एलिमेंट है उन सबको चेंज करेगा। और हैश क्या करता था, ID, उस CSE ID का जो एलिमेंट है वो उसको चेंज करता था, ठीक है। इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे यहाँ नहीं, मुझे सारे P को चेंज करना है, ठीक है, तो अब आप देखिए एक साथ सारा P सेम चीज़ का हो जाएगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ, देखिए सारा का सारा P सेम। अब यहाँ पे क्लास और ID की बात नहीं आई, दिस इज़ एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइट का सारा जो पैराग्राफ्स है, सारा का सारा जो हेडिंग है वो सेम कलर का हो हर वेब पेज का, ठीक है, तो आप उसमें एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कीजिए, वो सबका सब चीज़ को एक कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एक कुछ ग्रुप हो, तो आप देन क्लास सेलेक्टर का यूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा लाइक कोई पार्टिकुलर चीज़ें हो, पार्टिकुलर एलिमेंट हो, तो आप देन ID का यूज़ कीजिए। और एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हमने H1 टैग डाला, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा हैकस्लैश, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये H1 टैग को भी सेम कलर दिया, सेम फॉन्ट, क्या नाम है, साइज़ तो H1 का अलग होता है बट बाकी सब उसने सेम दिया। रीज़न बिंग, ऐसा क्या रीज़न हुआ, रीज़न कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, इसका नाम ही यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये सब चीज़ को सेम कर देगा। मतलब अगर चाहते हैं कि मेरा हेडिंग का भी कलर सेम हो, पैराग्राफ भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, डिव भी सेम हो, मेरा फॉर्म का जो टैग है वो भी सब कुछ सेम हो, देन यू विल यूज़ व्हाट, देन यू विल यूज़ हियर नथिंग एल्स देन universal selector. So this is what different type of selectors are. Now we will proceed to pseudo classes and pseudo elements. So this is where web development actually gets fun and interactive. Right now our styles are static. What if we want to a button to change color only when the user hovers their mouse over it? ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो चेंज करे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे
हवर करेगा अगर कोई भी एलिमेंट और उसे चेंज करना है, तो हम लोग एक पहले टैग बना लेते हैं। मैं इसी कॉपी कर रहा हूँ सो दैट आपका टाइम बचे। मैं यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए और इग्नोर द फॉर्मेटिंग राइट नाउ। मैं यहाँ पे कोई एक एंकर टैग डाल देता हूँ और एक साइट, कोई रैंडम साइट, लेट सपोज गूगल डॉट नहीं NIT पटना का साइट डालता हूँ। नाउ लेट्स गो टू आवर ब्राउज़र। अब आप देखिएगा यहाँ पर जैसे हमारा कर्सर आ रहा है इसके ऊपर, इट बिकम्स रेड। Now when I move my cursor over the link in the browser, it turned red instantly. No JavaScript required, just pure CSS magic. ठीक है, तो ये चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक स्यूडो क्लास। ये स्यूडो क्लास इस चीज़ को टारगेट करता है। ठीक है, जो हम लोगों ने यही चीज़ किया है यहाँ पे ए हवर करके जो सेमी कॉलन लगाया है, कॉलन लगाया है हमने। ठीक, pseudo class targets the state of an element. We write it using a single colon. Okay, so pseudo elements को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हम लोग VS कोड में जाए तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे कि सी, यहाँ पे P / I am done ये लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं pseudo एलिमेंट को हम लोग ऐसे डबल कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी कोई आपको बहुत हाई लेवल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्यूडो एलिमेंट्स होता है, इट टारगेट्स ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ये पैराग्राफ को टारगेट नहीं करेगा। अभी आप देख लीजिए कि कैसा ये दिख रहा है। सी, ऑल दीज आर लाइक इन एक्वामरीन कलर। ये तो जो रेड हमने किया था पहले से हो रहा है वो स्यूडो क्लास की हेल्प से। ये दीज आर इन एक्वा कलर। अब मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन लिखा है। आप पूछोगे क्या फर्स्ट लाइन का काम ही क्या हो रहा है? कुछ तो काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे एक आपका पैराग्राफ आपने लिखा, उसमें मल्टीपल लाइंस है। आप चाहते हैं कि पहला लाइन कुछ अलग दिखे बाकी लाइनों से, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि लाइन ब्रेक के लिए हम लोग BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। अरे ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पे जब हैकस्लैश जो लिखा ये हमारा फर्स्ट लाइन में आया, एंड नाउ दिस इज I am done इज इन सेकेंड लाइन। दैट्स वाई यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें हेल्प आती है स्यूडो एलिमेंट्स की। वो पहले लाइन के पैराग्राफ के पहले लाइन को उसने क्या किया, एक्वा कलर, और बाकी लाइन को वैसे ही छोड़ दिया। सो दिस इज़ वेयर स्यूडो एलिमेंट्स कम इन हेल्प यूजिंग डबल कॉलन, एंड इट टारगेट्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो गाइस जब तुम एक प्रॉपर मॉडर्न UI बनाते हो ना, तो ये हवर इफेक्ट्स और स्मॉल माइक्रो इंटरेक्शन ही तुम्हारे वेबसाइट को प्रोफेशनल फील देती हैं। सो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस दिस सेलेक्टर्स। इफ वी टॉक अबाउट टाइपोग्राफिक स्लाइड, I think I can explain you much better. Like, the default font on the web is usually a generic serif font, like Times New Roman, which can make your website look like it was of 90s. Okay, so we use the font family property to change this, usually setting a primary font and a fallback. What is fallback? If a browser didn't support this the first font, it will fall back to the second one, and if the second one is not there, then third one. This is why we use font family property. So next is font size. We use 16 pixel. There is 1.2 m, 1.2 rem. What is m and rem? So these are relative units, and 16 pixel is an absolute unit. And we will talk about why relative units are a bit better than absolute unit in a moment. To emphasize text, we don't just rely on HTML tags. We also have the CSS font weight property. You can set it to the normal, bold, or use
Numeric values ranging from 100 to 900, where 400 is normal text and 700 is like bold. Okay, we can also change the font style to italic, and you know what italic means. Finally, we have text properties. You can align your text left, right, center, or justify it. A massive pro tip from my end will be, for making your articles easier to read, is to adjust the line height, usually to 1.5, to give the text breathing room. And the most common trick you will use every day is to apply text decoration none to remove those ugly default underlines from your anchor links. And I had told you this, I am telling you this again. Also, you can even force text to be uppercase or lowercase using text transform. Okay, so when we talk about background fundamentals, a solid background color is fine, but modern web design requires more. The design which currently AI is making, it is using a lot of gradient in there, and their gradient was way more perfect than ours. So you can set a background image using a URL, but when you do this, the image might tile and repeat itself. So you can control this with the background repeat property, setting it to no repeat, repeat X for horizontal tiling, or repeat Y for vertical tiling. To center the image perfectly, use background position center, and to make sure it covers the entire section without stretching or squishing weirdly, use background size cover or contain. Instead of writing 5 separate lines of code for this, you can combine all of these into one clean shorthand, like background, then you should name color, then URL under which you will give the image position or give image name, then no repeat center or cover, whatever you want to write. You can even layer multiple backgrounds, like putting a semi-transparent overlay graphic over a background image, or you can skip images entirely and create stunning gradients using linear gradients. Linear gradient means is like blending from left to right. Okay, and what does linear gradient means? So starting from a circle in the center, so it will start from this color and will end to this color, starting from left to the right, and this will starting from the center to the edges of the circle or to the circumference of the circle. When we talk about border, like basic border is like this is what it is. Basic border, like border width, then border style, and then border color. Okay, but you can get highly creative and target individual sites with completely different styles. You can have border top 2 pixel dashed red. I had already explained you how it will be done. Okay, लाइक यहाँ पे पहले विड्थ हो गया, फिर उसके बाद स्टाइलिंग हो गया, उसके बाद कलर. हो सकता है कि किसी को ऊपर कुछ डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल चाहिए, नीचे कुछ डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल चाहिए. आई ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट बॉर्डर रेडियस, like it softens the sharp harsh corner of our HTML boxes. You can apply a simple 5 pixel to round all corners equally, or you can specify multiple values to target the top left, top right, and bottom left individually. The absolute best trick, if you have a perfectly square image and you have applied border radius 50%, it will immediately turn into a perfect circle. Remember it. This is exactly how rounded profile picture are made on platform like Instagram or Twitter. So now you had learned about it. Okay, now when we go to the styling fundamentals of units and measurements, we have I had already told about absolute unit and relative unit, but I'll explain it here. Pay close attention here, because this is foundation of making your website look good on both laptops and mobile phones. When we talk about absolute unit, these are fixed rigid values like pixel, pt,
inch or centimeter. If you make a box 200 pixel wide, it will stay exactly 200 pixel wide irrespective of the screen size. If you have a smaller screen like a phone, if you are using a phone, it will still be of the width 200 pixel. The whole like element will overflow from your screen and it will like break your design. Okay, it will break your layout in a very bad manner. So this is why modern web developments rely heavily on relative units. That's what I had told you about M and RAM. So what is M? M and RAM are relative to font sizes. M looks at the parent's element font size while RAM looks at the root font size of whole HTML document. And I think using RAM for sizing is highly recommendable for like recommended for accessibility. Next are viewport units. So VW stands for viewport width and VH stands for viewport height. 50 VW means the element will take up exactly 50% of the screen's width, and 100 VH means it will take up 100% of screen's height, adapting perfectly whether you are on a phone or a TV monitor. We also heavily use percentage like width 100% or max width 80% to make elements scale fluidly within their parent containers. And lastly, we have advanced CSS functions like clamp, which allows you to set a minimum, ideal, and maximum size for an element, making your typography incredibly responsive without writing complex media queries. So these are few things that you should keep in your mind. Okay. Now I have some HTML and CSS code ready for you to explain something. Let's see. So initially I had designed a div in which I had uploaded a like user image tag. I had given it a class. I had already told you, and I had already told you what it shows if the image didn't load. That's why we are using alt attribute. Then we had used h2 tag. I had already explained about this. Now there is href anchor tag, and here is href. Now why we are using href? Because like href is like directing a link, directing to a link to another website maybe. So if you want to direct it, then you will put some like nitp.ac.in, but we don't want it to direct it anywhere. That's why we are using hash. Okay, so this is an anchor tag, then this is h2 tag, this is image, and all of these are in a div. Now let's see how it looks like. See, this is what it looks like. There is a div, and inside it this is a h2, and above it here is like an image which isn't loaded. You can clearly see because this is the image name which I had used. I don't have any image with this name, that's why it can't be loaded. Then there is an anchor tag which is connect, okay, which is written as connect. Now look at this profile card we just built. Let's connect this to the theory we just learned. Okay, look at the body CSS. I think I should use it like this, and yeah, this will be great. I think we should. Now this is great. So we had used a linear gradient to make that nice blue background. I had told you. See, if you are looking at the left most corner of my screen, you can clearly see that the blue here is light. But when you look at the same background here, it's a kind of dark. How it happened? It happened with the help of gradient. That's why we are using gradient, and you can clearly see like
We had used background. Here is linear gradient to right, and this is the light color which we are using. You can clearly adjust it. See, it become more lighter. So this is what linear gradient do. Then now look at the profile dot profile card. And what is dot profile card? See, this is a div, the class name profile card. This is a div in which all of our content is there, the image, the h2 element, and the anchor tag. Okay, so when we go with that, go on the class of profile tag, styling of profile card, we have viewed with 50%. What is 50%? I had explained you recently, like 50% is a relative unit. Okay, we gave its background color using RGBA. I had already explained you what is RGBA means. A stands for alpha, which decides the opacity. Okay, so this is what RGBA stands for. The A stands for alpha. So it's slightly transparent, showing the blue gradient behind it. You can see here. And if you don't want it, let's do this. You can see it become more transparent. The div become more transparent. Okay, but we don't want this. We want 0.8 will be a much better option. I think 0.5 will be a much better option with a 50% opacity. And here is the box model in action. We gave it padding 30 pixel so the text doesn't touch the edges. You can understand what padding means. The distance between the content and the border is padding. Now, when we talk about the border radius 15 pixel, now you can see here, like you have curved corners, smooth curved corners. Okay, now the and notice this line margin 50 pixel auto. The auto is the magic trick we talked about. It perfectly centered our card in the middle of the screen. See, we had already like minimized the screen to half of its width. Still it was in center. Still it is in center. See, that's what responsive design means. Now I think you should connect to all of the things I had told you. Finally, look at the profile picture. It was originally a square image, but by applying border radius 50%, it make it a perfect circle. And for our connect link at the bottom, we use text decoration none. Now, if you use remove this thing, okay, see, you can clearly see there is an underline thing which came. That's why we use text decoration none to remove that underline thing. Okay. Then display inline block, so we could actually apply padding and margin to it like a block element while keeping it behaving like a link. So this is importance of display inline block. It takes the block property but stays polite and remains in the line. Okay, so I think these are the things we had studied in the slides, and now we had implemented it here. Okay, so this is the power of CSS styling and the box model. Now we will jump to next slides. Alright everyone, let's move to section 11. I need that you should have some complete focus right now because we are about to cover the most critical topic in CSS. It is very important from every point of view. Now, what is box model? Like, if you don't understand this, your website layout will always look broken. Here is the core concept. Every single element on the web page is essentially a rectangular box. Okay, this box is made up of 4 different core components working from inside out. Okay, now you can imagine like there is a wall and there are multiple photo frames hanging on it.
The photograph itself is the content area. The white cardboard border surrounding the photo inside the glass is the padding. Remember that padding is the space inside the border. The wooden frame itself is the border. And finally, the empty wall space between this frame and the next frame is your margin. So you should remember that padding is the space inside the border and margin is the space outside the border. Let's look at how we write this in code. For margins, you can target individual sides like margin top 10 pixel. But as developer, we use shorthand. Like if you had write 10 pixel and 15 pixels, it signifies that margin at top will be 10 pixel and 10 pixel at bottom 2. And when you select here 15 pixel, it means that margin at left will be 15 pixel as well as at right 2. It means if you are using two different sizes here, then the first one signifies to top and bottom and the second margin signifies to left and right. Like if you use four different margins, it signifies to top, right, bottom, left. If you imagine like top, right, bottom, left, it is going in clockwise direction. Okay, so if I type margin 0 auto, what will happen? It will perfectly center the element horizontally on the screen. Remember this. You will use the trick in almost every project. So border properties work similarly. You can specify border width, border style and border color individually. But again shorthand is better. तो शॉर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे तुम साइज लिखते हो, बॉर्डर मतलब बॉर्डर विड्थ लिखते हो यहाँ पे 2 पिक्सल, देन यू विल गो फॉर बॉर्डर स्टाइलिंग लाइक सॉलिड, डॉटेड, डिफरेंट थिंग्स आर देयर, एंड उसके बाद तुम बॉर्डर कलर सिग्निफाई करते हो. ओके और इंडिविजुअल साइड्स पे तुम बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम ऐसे करके सिग्निफाइज कर सकते हो कि तुम्हें अलग अलग साइड्स में अलग अलग लाइक डायरेक्शन में कैसा बॉर्डर चाहिए. हो सकता है कि तुम्हारा एक डिव हो, उसमें तुमको टॉप में सॉलिड बॉर्डर चाहिए और राइट साइड में डॉटेड चाहिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू. अच्छा, बॉर्डर रेडियस क्या करता है? बॉर्डर रेडियस जो है वो तुम्हारे एजेस को लाइक कॉर्नर्स को कर्व करता है. दैट्स वाई इट इज रिटन एज राउंडेड कॉर्नर्स. So padding behaves exactly like margin, but it creates a space inside the element. Like shorthand अगर use करोगे padding का, like here is padding 20 pixel. It will apply 20 pixel of breathing room on all the four side of your content. चारों side वो 20 pixel छोड़ देगा. Remember this. और ये भी margin की तरह काम करता है. The first one signifies to top and bottom, and the second one signifies to left and right. Now let's talk about the display property. By default, HTML elements behave in one of two ways. First, we have block elements like div or h1. I had already shown you what h1, h2, h6 means and what div means. They are greedy. They take up the full width of the screen and always start on a new line. Second, we have inline elements. It means like they are kind of polite. They only take up the width that they actually need and stay in the line with the text. If you want to like the best of both worlds, you should use inline block. समझो इस तरह से, like it stays in the line like a polite element, but it allows you to add custom heights and widths like a block element. I'll repeat it. ये लाइक लाइन में रहता है, ठीक है, इट स्टेज इन लाइन, बट ये तुमको अलाउ करता है तुम कस्टम हाइट और उसको विड्थ जैसे ब्लॉक एलिमेंट में रहता है तुम उसको वो फीचर कर सको. दैट्स वाई पीपल ऑफन प्रेफर इनलाइन ब्लॉक समटाइम्स. और अगर तुमको कुछ चीज़ हटाना है, इफ़ यू वांट टू हाइड समथिंग, देन डिस्प्ले नन should be done
यू कैन ऑल्सो यूज विजिबिलिटी हिडन, बट दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि डिस्प्ले नन जो है वो एलिमेंट को बिल्कुल वहाँ से हटा देगा, जैसे वहाँ पे एलिमेंट कोई था ही नहीं, ठीक है। बट विजिबिलिटी हिडन क्या करता है कि वहाँ पे एलिमेंट तो दिखाई नहीं देगा आपको, बट वहाँ का एलिमेंट का स्पेस रिजर्व रहेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सो व्हेन वी कम टू स्टाइलिंग फंडामेंटल्स, देयर द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक कलर। तुम लोग देखते हो कि हमने कभी कलर रेड चूज़ कर लिया, कभी दिस हेक्साडेसिमल चूज़ कर लिया, कभी इस तरह से चूज़ कर लिया। देयर आर मल्टीपल टाइप्स जिससे हम लोग डिफ़ाइन कर सकें, और लकीली तुम इनमें से किसी में भी डिफ़ाइन कर सकते हो। So let's add some life to our pages. In CSS we rarely use simple color names like red. हम लोग ऐसा जो है वो पहले यूज़ करते थे, अब यूज़ नहीं करते हैं ऐसा। We use hexadecimal values like these, जो 6 डिजिट या 6 लेटर या 6 डिजिट में होता है हेक्साडेसिमल नंबर, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग RGB वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, रेड की कितना उसमें क्वांटिटी है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, और लकीली इससे तुम सब कुछ डिफ़ाइन कर सकते हो। जितने भी कलर्स तुमको चाहिए वो इस वैल्यू से भी डिफ़ाइन हो सकता है। लोग को ऐसा लगता है कि नहीं यार, आर से सिर्फ 255 ही डिफ़ाइन होगा, मतलब सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू ही डिफ़ाइन हो सकता है। नहीं, यू कैन डिफ़ाइन ऑलमोस्ट एवरी कलर फ्रॉम दिस, एंड 255 इज़ द हाइएस्ट वैल्यू। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ तुम देख रहे हो कि RGB विथ ओपेसिटी यूज़ करना है, ओपेसिटी इज़ 0.5 इज ओपेसिटी, ओके। तो इसका मतलब है कि वो 50% ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर में इस चीज़ को यूज़ करते हैं, कलर कोलोन RGB 255.0.0 0,0 0.5, देन ये 0.5 जो है वो इस बॉक्स को 50% ट्रांसपेरेंट बना देगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी बिल्ड दोज ऑसम ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट्स। तुम्हें लगता है वो ग्लास वाला इफेक्ट कैसे आता है, ट्रांसपेरेंसी कैसे आता है, वो इस तरह से आता है। सो वी यूज़ दिस वैल्यूज़ फॉर टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर्स एंड बॉर्डर कलर, ठीक है। इसको आप किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो। नाउ व्हेन वी कम टू टाइपोग्राफी, for typography, like you change your font using font family, you adjust the thickness using font weight, bold or numeric values like 400. You can align text, and most importantly you can use text decoration. अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, लाइक अगर तुम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर रहे हो, तो अगर कोई प्री डिफाइंड टेक्स्ट डेकोरेशन है, उसमें टेक्स्ट है लाइक बोल्ड है, तो वो उसको नॉर्मल कर देगा, ठीक है। तुम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, कि मेरा ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ हेडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अंडरलाइन करना है तुम्हें, तो तुम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करो, वो हो जाएगा, ठीक है। और समटाइम्स लाइक फ्रॉम एंकर लिंक्स यू हैव टू रिमूव इट, तो यू शुड यूज टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो जो अगली डिफ़ॉल्ट अंडरलाइंस होता है एंकर लिंक से, जो ए टैग हमने पढ़ा था पहले, उसे रिमूव भी कर देगा उसे। So for backgrounds we can go beyond solid colors. We can add images using background image, ठीक है। You can say like background image हम लोग यूज़ कर लें और यहाँ पे URL डाल देंगे उस इमेज का, इसका भी बहुत हम लोग यूज़ करते हैं। You can combine property into a single shorthand, like background यूज़ किया गया है और उसके बाद URL भी इसमें दे दिया गया है। What does it mean? We can even create stunning gradient backgrounds using linear gradient और radial gradient. और लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट जो है, दीज आर लाइक ग्रेट थिंग्स। और सबसे बड़ी बात कि जो AI यूज से प्रोजेक्ट यूजुअली बनाते हैं लोग, उसमें ग्रेडियंट का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उनके ग्रेडियंट्स बहुत परफेक्ट होते हैं, ह्यूमन ग्रेडियंट चूज़ करने में थोड़ा थोड़ा इशू कर देते हैं। ऑब्वियसली दे आर मच मोर ट्रेन्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स, ऑन डिफरेंट डेटा सेट्स, दैट्स वाई। नाउ let's touch on advanced borders. You can get highly specific, like adding a dashed red border exclusively to the top and a dotted blue border to the right, ठीक है। All right, guys. Welcome to now section 13, layout techniques. अब तक हमने जो भी CSS देखी है वो एलिमेंट्स को कलर करने या टेक्स्ट बड़ा करने के बारे में थी।
But the real challenge in web development is putting things exactly where you want them on the screen. Back in early days, developer used crazy hacks like using HTML tables just to put an image next to next. Or even if you want to put that image next to text, in early days, developer used HTML tables. And truly speaking, it was a nightmare. But after then, CSS evolved and gave us our first major superpower, which is known as Flexbox. So Flexbox stands for Flexible Box Layout Module. Anyone can ask, what does it do? So it is designed to efficiently distribute space. It gives you incredible alignment and distribution control over your elements. And if there is one single keyword you must remember for examinations and interviews, then it is this, like Flexbox is a one-dimensional layout system. अब इसको लेमन टर्म्स में क्या मतलब है इसका? तो ऐसा समझ सकते हो कि imagine people are standing in a straight queue at a billing counter. You can arrange that queue horizontally in a row, or you can arrange it vertically in a column. But you can only deal with one single line at a time. Okay, you can't build a chessboard with just Flexbox. It is perfect for things like navigation bars, where you want your college logo on the extreme left and the menu links on extreme right. ठीक है? तो आपके लिए मैंने कोड कर रखा है पहले से। सी हियर, मैंने बॉडी के अंदर एक नैवबार लिखा है जिसको हमने पहले पढ़ा है कि नैव टैग का यूज करते हैं नैवबार बनाने के लिए। उसके बाद एक क्लास का यूज किया है और हमने नॉर्मली डिव बना के हैक्सलेस क्लब लिखा है। आफ्टर दैट मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया है। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें पता है कि वो क्या देता है, वो बुलेट्स देता है, बुलेट पॉइंट्स देता है। नाउ हमने क्या किया है कि जो कोड मैंने लिखा था, मैंने बस उसके पेरेंट कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया। अब आप बोलिएगा कि पेरेंट कंटेनर क्या? पेरेंट कंटेनर लाइक li is a list items and dual is the parent container of that. तो हमने जो यहाँ इसका क्लास था नैव लिंक्स में हमने यूज किया है डिस्प्ले फ्लेक्स का। आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके तुरंत बाद ये जो एक प्रॉपर लाइन में आ गए, ये जो लिस्ट के एलिमेंट्स थे ये प्रॉपर लाइन में आ गए। अब आप बोलिएगा कैसे? सो लेट्स सी। ये देखिए होम इवेंट्स टीम ये सब एक लाइन में आ गए। अब आप बोलिएगा कि अगर हम लोग फ्लेक्स यूज नहीं करते तो क्या होता? ट्राई करके देखते हैं क्या होता। हम लोग इसकी जगह पे कमेंट कर देते हैं इसको। कमेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कमांड और स्लैश का कमांड स्लैश यूज करके आप कमेंट कर सकते हैं किसी। नाउ ये देखिए आपका होम इवेंट्स टीम लिस्ट के टाइप आ गया। अब आप बोलिएगा कि आपने बोला था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो बुलेट पॉइंट्स आते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स आते हैं बट मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन कर रखा है, इसीलिए बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर मैं इसको भी हटा दूं पूरा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ बुलेट पॉइंट्स आएंगे। ओके, सो इस बात को ध्यान रखिए, अगर हम लोग को बुलेट पॉइंट्स हटाने हैं तो हम लोग लिस्ट स्टाइल लर्न कर देंगे। और अगर किसी चीज को एक लाइन में लाना है, एक रो या एक कॉलम में लाना है, तो हम लोग उसको डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि हैकस्लैश क्लब जो हमने लिखा है यहाँ पर एक डिव में ही, वो भी तो एक लाइन में आया है इन सबके साथ। बट आप इसको तो पहले लिखिए, आप इसके बाद में लिखें इसको। तो आप देखिए यहाँ पे हमने जो नैव बार है उसमें भी हमने फ्लेक्स यूज किया है। अगर हम यहाँ पे फ्लेक्स यूज नहीं करते तो देखिए ये ऊपर आता है हैकस्लैश क्लब और होम इवेंट्स टीम का जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का सेक्शन है ये नीचे आता है। ये अभी भी आपका एक ग्रुप में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूज कर रखा है पहले से फ्लेक्स, बट इसमें नहीं करा था पूरे में, इसलिए ये वर्टिकल पोजीशन में आ रहा है। तो ये होता है फ्लेक्स। ठीक है, बट it also has incredible responsive design capability, meaning it can squish or stretch those items automatically based on the screen size. ठीक है,
रिस्पॉन्सिवनेस काफी अच्छा होता है। अब हमारी बात होती है, बट व्हाट इफ अ सिंगल लाइन इजंट एनफ? व्हाट इफ यू आर बिल्डिंग द hackathon website of some club and you want a proper layout for your event feature? This is where second superpower comes in, which is CSS grid. अब CSS grid क्या करता है? While Flexbox handles one dimension, CSS grid is a powerful two-dimensional layout system. This means you finally have rows and columns management at the exact same time. You can create complex grid-based layouts that look like a spreadsheet or a chessboard. Okay, it gives you precise control over element placement. You can literally tell a specific image that, hey, I want you to start at row 1, column 1, and stretch all the way to row 2, column 3. तो ऐसा कर सकते हो ग्रिड में। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर कोड यूज करा है ग्रिड के लिए, हमने ऐसे 24 आवर हैकेथॉन टेक वर्कशॉप ऐसा कुछ लिख रखा है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है डिस्प्ले ग्रिड का, जो कि मैंने अभी कमेंट आउट कर रखा था। अब इसको चला के देखते हैं कि दिखता कैसा है। सी, इट वॉज कंप्लीटली अरेंज्ड इन 4 डायरेक्शंस। अब अगर हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं डिस्प्ले ग्रिड को, तो आप देखो कैसा दिखता है ये। कंप्लीटली अरेंज बट इन विच डायरेक्शन? जस्ट एक के नीचे एक आ गया ये। तो हमने क्या यूज किया है? डिस्प्ले ग्रिड यूज किया है और फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज किया है। तो इसने पूरे लेआउट को एग्जैक्टली दो इक्वल कॉलम्स में तोड़ दिया। I didn't have to calculate percentage manually. It just works. And just like Flexbox, it allows for responsive grid design. Flexbox for lines, grid for complex structure. ये रूल हमेशा याद रखना। तो नेक्स्ट अब आता है पोजिशनिंग की बात, कि what is positioning? Sometimes you don't want an element to follow the normal flow of page. You want it to break the rules. You That's why we use the position property for this. It has 5 main values. Static, ये डिफॉल्ट पोजिशनिंग होती है। अगर तुमने कुछ नहीं लिखा है तो एलिमेंट स्टैटिक ही होता है। इट सिट्स एग्जैक्टली वेयर द HTML पुट इट। ठीक है। सेकंड इज रिलेटिव। दिस मींस द एलिमेंट इज पोजिशनड रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। अगर तुम CSS में लिखते हो कि टॉप 10 पिक्सल, तो एलिमेंट अपनी ओरिजिनल जगह से 10 पिक्सल नीचे आ जाएगा, बट अपनी पुरानी स्पेस को रिजर्व छोड़ देगा, खाली छोड़ देगा उस चीज के लिए। आप ट्राई करके देखना इसको। थर्ड इज एब्सोल्यूट। इस बात का ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट जो पोजीशन होता है, दिस इज डेंजरस बट पावरफुल। ये जो नियरेस्ट एंसेस्टर होता है, इट इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजिशनड एंसेस्टर। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट बाकी डॉक्यूमेंट को इग्नोर करता है और हवा में स्टे करने लगता है। इट इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो। फोर्थ इज फिक्स्ड। दिस मीन्स द एलिमेंट इज पोजिशनड रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। आपने देखा होगा कोई AI विजेट जो होता है या फिर AI चैटबॉट होता है, वो हमेशा राइट साइड में फिक्स्ड रहता है कहीं एक जगह, काफी सारे वेबसाइट में। और अ रजिस्टर नाउ बटन दैट नेवर डिसअपियर्स नो मैटर हाउ फार डू यू स्क्रॉल। इस चीज के लिए हम लोग फिक्स्ड पोजिशनिंग का यूज करते हैं। एंड फाइनली स्टिकी। दिस इज अ ब्रिलियंट हाइब्रिड बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड. It behaves normally like a relative element, but the moment you scroll past it, it sticks to the top of your screen like a fixed element. और ये नेविगेशन बार्स के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमने एक फॉर्म बनाया यहाँ पे। फॉर्म इन द सेंस हमने H1 H2 कुछ यूज रखा है, एक बटन बनाया है। अगर आप इसको देखिएगा, देखिए, दिस इज रजिस्टर नाउ बटन। अब ये रजिस्टर नाउ बटन को आप स्क्रॉल कीजिए, ये यहीं रहेगा। और स्टिकी का नैवबार स्टिकी के लिए कैसे यूज करते हैं आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टिकी यूज किया इस नैवबार में, स्क्रॉल तो हुआ बट आफ्टर दैट तो फिक्स हो गया ऊपर जाके। सो दिस इज व्हाट स्टिकी डज। और उसे लिखते कैसे पोजीशन में? तो पोजीशन फिक्स्ड और यहाँ पे पोजीशन स्टिकी। नाउ नाउ वी अराइव एट सेक्शन 14, responsive design. So guys, listen to me carefully now.
A website that looks beautiful on your 15-inch laptop monitor or 13-inch Mac or a 24-inch laptop or a monitor will look completely broken on a 6-inch mobile screen unless you specifically design it to adapt. So how do we do this? For this, we use media queries. A media query is a CSS technique to apply styles based on device characteristics like width of the screen. We use them to adapt the layout for different screen sizes and devices. What to say? Look at the syntax. चलो VS Code पे हमने एक फाइल बनाया responsive.html करके. हम ये क्लोज कर देते लोकल होस्ट का पोर्ट. अब यू कैन सी लाइक वी डिड नथिंग एल्स. हमने सिर्फ item 1 item 2 item 3 लिखा. आफ्टर दैट हमने व्हाट क्या यूज किया? हमने सिर्फ मीडिया स्क्रीन यूज किया एंड मिनिमम विथ 768 पिक्सल को यूज किया. इसका लेमैन मीनिंग क्या है? नॉर्मल लोग इसे क्या समझ सकते हैं कि ये व्हाट इज कुछ एट द रेट लिखा है, min width लिखा है, क्या है ये? तुम सीएसएस को सिर्फ एक कंडीशन इफ दे रहे हो. ठीक है, इसका मतलब है कि तुम सीएसएस को एक इफ कंडीशन दे रहे हो. तुम बोल रहे हो भाई अगर यूजर की स्क्रीन का विड्थ 768 पिक्सल जो है से बड़ा है, यानी वो फोन पर है. अगर यहाँ पे हम लोग मैक्स विड्थ लिख देते हैं कि मैक्स विड्थ 768 पिक्सल. ठीक है, तो सीएसएस को तुम ये बता रहे हो कि भाई अगर यूजर की स्क्रीन का विड्थ 768 पिक्सल से छोटा है यानी वो फोन पर है. ठीक है, तो पुराना डिजाइन भूल जाओ और इस नए ब्लॉक के अंदर जो लिखा है वो डिजाइन लगाओ. ये हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, यूजिंग दिस we can tell a 3 column desktop layout to instantly become a 1 column layout on mobile. ठीक है, नाउ इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कैसा दिखता है. तुम देख रहे होगे यहाँ पे एक लेआउट बन गया कुछ. अब बोलोगे इसको चेक कैसे करें? इसके लिए हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे और लेट्स मिनिमाइज इट. सी, स्क्रीन साइज छोटा होने के बावजूद भी कितना अरेंज मैनर में सब कुछ. क्यों ऐसा? ऐसा होता है तुम्हारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की वजह से. इसीलिए हम लोग मीडिया स्क्रीन, मैक्स विड जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं. ठीक है, और आपको कोई भी अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि वो प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को फॉलो करता हो. आपको अगर कोई टास्क मिलता है किसी भी जगह पर तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को फॉलो कर रहा हो. ठीक है, अदरवाइज़ आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया वो सिर्फ लैपटॉप में अच्छा दिखता है और फ़ोन में वो नहीं खुलता है तो वो प्रोजेक्ट को वैल्यूएबल प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए. नाउ, because over 60% of our web traffic today comes from mobile phones, the industry standard is to use a mobile first approach. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि instead of building a massive desktop site first, you actually design for mobile devices initially. You write your base CSS so the site looks perfect on a small screen. Then you use media queries as a progressive enhancement for larger screens. इस बात को हमेशा याद रखना. So why do we do it in this order? Because it forces you to prioritize content and performance on smaller devices. Mobile internet can be slow and mobile processors aren't as powerful. If you load 10 heavy background images for a desktop site and try to hide them on mobile, the phone still downloaded them. Mobile first ensures you only load what is absolutely necessary. ठीक है, तो that this is what mobile first approach slide explains. Now next slide, viewport considerations. And finally, to make all this responsive magic work, there is one HTML tag you can never forget and you should never forget. What is that? In our HTML section, we also discussed about this. And I am reminding you again, you must use meta name viewport tag inside your head. This tag is to control initial page scaling.
अगर तुम ये लाइन भूल गए तो तुम्हारे CSS मीडिया क्वेरीज मोबाइल पर ठीक से काम नहीं करेंगे. The mobile browser will assume you made a desktop only site and it will try to zoom out and squish the entire 15-inch layout into a 6-inch screen. The text will become microscopic and unreadable. So you should always respect the viewport tag. Acha. So this is the end of our HTML and CSS discussion. बट मैं कहूँगा कि आप इसको मास्टर करने के लिए HTML CSS को, बिकॉज दिस इज़ द बेस, इसको मास्टर करने के लिए आप W3 स्कूल्स या कुछ फ्री रिसोर्स यहाँ दे रखे हैं, इसको डेफिनेटली पढ़िए. और अभी से ट्राई कीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन पे आपका प्रोफिशिएंसी हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की एक आदत लग जाए. एक हैबिट होने से आने वाले चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा. ठीक है. एंड W3 schools is like having a interactive tutorials is a great platform to learn. So I think you should go and visit there, and if possible do the exercises, practice some coding, and as a summary you should learn CSS from there too, क्योंकि वो कम टाइम में आपको ज़्यादा कुछ सिखा सकता है. ठीक है. और इंटरेक्टिव लेसन्स और सर्टिफिकेशंस के लिए यू शुड डेफिनेटली विजिट फ्री कोड कैम्प. सो दैट्स इट, एंड थैंक यू गाइज.